जी मियां साहब की ग्रेड अस्सलाम वालेकुम। हाँ कल कैसे हाँ सर जनाब खरीद ठीक है चलो ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ अच्छा ठीक है ऐसे मैं आगे मिल लगा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਸਰ लगा दो ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਾ हो सकता है लॉन्ग टाइम का सी This is Honorable Walter from the Jazakallah khair. I know you came for the Oscar come through here to let you a podcast. weet ik als niks shouten in bas karo आजा बड़ी अच्छी
आउज़ बिल्लाह يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम मौलाना मोहम्मद बाकर अत्तारी साहब से एक वो स्टेज पे तशरीफ लाए। बावज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बावज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, अरे खुदा की कसम ये खुदा चाहता है, क्योंकि ये नाम मोहम्मद नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। बावज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु वालिही। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि पढ़िए सल्लु लिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफत जाबे जमालिहि हसन जमीउ खिसालिहि सल्लु। और आका करूं तेरे नाम पे जा पिता, करूं
मैं पे जा फिदा करूं तेरे नाम मैं पे जा फिदा ना बसे के जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी बरा अरे करूं क्या करोड़ों जहान ही बलगल लाबे कमाल कशफ तुझा में जमाली हसन जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि बहुत ही प्यारा शेर मेराज नबी के हवाले से के सल्लू अलैहि व आलिही और वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गई अरे सर अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है बलगल उला बेकमालिही कशफ तुझा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अल हबीब जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम मौलाना बाकर मदनी साहब. Now we are going to play national anthem of Democratic Republic of South Africa. So I will request everyone to please stand, and after that we are going to play the national anthem of Pakistan and Kashmir as well. Sabah
Have seats, please. Honorable guests, thank you for joining today's session, the true picture of Kashmir. Now I need your attention. We are going to play a short film documentary on Kashmir issue, especially after abrogation of Article 370 and 35A. So you will come to know the current situation of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India revoked Articles 370 and 35A in occupied Jammu and Kashmir. Kashmir is on both sides of LOC and the world refuted these actions and on the day as Yawm-e-Istisal. Article 370 granted special status to the state of Jammu and Kashmir, providing autonomy, exceptions from specific provision of the Indian Constitution. Whereas Article 35A aimed to safeguard against demographic changes by restricting government employment, property ownership, scholarships, voting rights and permanent settlement to state subjects only. Due to this decision, Kashmiri's human rights, civil rights and constitutional rights have been savagely violated. It's an Indian attempt to alter the demographic compositions of Kashmir from Muslim majority area to Hindu majority. Undermine the autonomy of Kashmir and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. Potentially influencing the outcome of a plebiscite in favor of India. India imposed strict restrictions to suppress dissents, turning it into a virtual prison. 200 laws have been introduced, including new domicile law in the last 4 years, to reshape the region. People faced barricades, internet shutdown, communication blackouts, fake encounters, custodial torture and destruction of houses, media curbs, and harassment of journalists became common. Propagating that after the revocation of Articles 370 and 35A, the people of Jammu and Kashmir would have bigger financial share from central government, more jobs, incentives for farmers, and better education facilities. More so, the decision to hold G20 summit in Srinagar and inviting Dubai's Emaar Group for investment is all farce. All independent media coverage has shown how this normalcy card is being played. Contrary to this, the Human Rights Watch, Amnesty International and all unbiased organizations' comments and findings speak volumes on this militarist normalcy. जो 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं, तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं,
जो लोगों को खामोश किया गया है। समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियां सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं, यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। International community must come forward to save Kashmiris from Indian atrocities. Thank you so much for your attention. Now, I would share shortly some figures and some situation in Jammu and Kashmir, which is based on Amnesty International and Human Rights Watch reports. From 1989 to 2025, more than 100,000 people in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir has lost their lives. Over 22,000 women have been widowed as a result of this conflict. More than 107,000 children has been orphaned. More than 20,000 people, especially youth, has been enforced, disappeared. And in this world, the first time in this world history, the term half widowed is used for the women of Kashmir. The women of Kashmir don't know either their husbands are still alive or not. So more than 20,000 women in the Kashmir is still living as a half widowed, and over 6,000 mass graves has been discovered in Kashmir. Over 11,000 women have been victims of sexual victims and rapes, and the victims of pellets guns, especially the children, are over 1,200. On my right hand side, you can see the pictures. As I can say, the picture can talk, the pictures can explain what is the true picture of Kashmir and what is the situation of Kashmir. Now I will shortly explain you about some laws from Indian forces in Indian illegal occupied Kashmir. First of all, NFSPA, that Armed Forces Special Power Act on